कीपिंग क्वाइट के क्वेश्चन आंसर्स प्लीज, जिसने भी चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है पहले चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं समझ में आएंगे, राइट? चलिए, what would be an exotic moment for man? Exotic moment किसको कहा है? So the poet feels that if man keeps quiet for some time and indulges in introspection, अगर इंसान थोड़ी देर चुप रहे और introspection में जाए, यानी कि अपने आप को जज करे, doing away with his workaholic attitude, अपना जो आपका workaholic attitude है उससे थोड़ी देर के लिए हट जाए, यानी कि सारे दिन काम करने का जो attitude है उससे थोड़ी देर हट जाए, he would experience an exotic moment. तब आप एक exotic moment experience करेंगे, and in this exotic moment he would enjoy the bliss of silence and be away from the dim of modern life. Why does one feel a sudden strangeness on counting to 12 and keeping quiet? एक वो अजीब सी strangeness क्यों आती है जब हम 12 तक count करते हैं या peace को feel करते हैं? One feels a sudden strangeness because quiet moments make one aware that excessive self-indulgence, बहुत ज़्यादा अपने आप को काम में लगाए रखना, self-indulgent रखना, has isolated man. उसने इंसान को isolate कर दिया है. Right? The realization of this drawback makes one feel a sudden but unfamiliar strength of human race. उसी ने इस इंसान को, यानी कि यही एक जो ड्रॉबैक है, ये जो रियलाइजेशन है इसका ड्रॉबैक का, उसी से इंसान को एक सडन सी स्ट्रेंजनेस आती है, एक सडन फीलिंग आती है कि किस तरीके से मैं पूरी रेस से, ह्यूमैनिटी से कट गया हूं, राइट? सो वही है सडन स्ट्रेंजनेस. What is the poet trying to convey through the images of the fishermen and man gathering salt? तो ये जो दो बंदे हैं इनसे क्या बताना चाह रहे हैं पोएट? Through these images, the poet is highlighting the harm man has been causing to nature and himself. So, जो हार्म इंसान अपने आप को या एनवायरमेंट को कर रहा है, एफर्ट टू एड कंफर्ट्स टू हिज लाइफ, और सिर्फ किस लिए? कि हमें कुछ कंफर्ट मिल सके. द फिशरमैन कॉजेज हार्म्स टू व्हेल्स, और मैन किसको कर रहा है? मैन एट सी हर्ट हिज हैंड इन एन अटेम्प्ट टू गैदर सॉल्ट, अपने हाथों को वो नुकसान कर रहा है सॉल्ट गैदर करने में, राइट? What does the poet mean when he says that a chemical war will result in a victory with no survivors? Chemical war से क्या होगा result? No survivors. The poet means that no life will survive such a war, कि कोई इस तरीके के war से कोई लाइफ नहीं होगी. A nuclear war will result in total annihilation of all the creatures including men. पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, इंसान भी खत्म हो जाएंगे. The release of toxic gases shall eclipse the sun and pollute the atmosphere, leaving no survivors to celebrate the victory. So कितना हार्म होगा, सन, नेचर, प्लांट्स, एनिमल्स, सबको इतना हार्म होगा कि उस विक्ट्री को, उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कोई भी नहीं बचेगा, राइट? सो ऐसी जीत का क्या फायदा, ठीक है? सो इसलिए उसे कहा है नो सर्वाइवर्स. What has man single-mindedly focused himself on? Right? So the poet feels that man has single-mindedly focused himself on advancement and progress of self. सिर्फ एडवांसमेंट और अपने लिए प्रोग्रेस के बारे में सोचा है. He has thus become a victim of senseless rat race that actually leads nowhere. Instead, the fad of this competition leads man to indulge in destructive activities. इसी वजह से हम सिर्फ destructive activities में indulge करते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा advancement की तरफ सोच रहे हैं, progress की तरफ सोच रहे हैं, अपने आप को comfort के बारे में सोच रहे हैं. Life is what it is all about. How is keeping quiet related to life? So life is an ongoing process and it cannot come to a standstill even after death. For old always gives birth to new. Right? So new का जो जन्म होता है वो old से ही होता है. So keeping quiet is related to life because it provides a pause to review the actions, decisions and the entire purpose of ह्यूमन एग्जिस्टेंस. ह्यूमन एग्जिस्टेंस का जो पूरा पर्पस है उसको तो आप सेलिब्रेट कीजिए, उसको तो रियलाइज कीजिए. हमने तो पर्पस ही कुछ और बना दिया है,
right? So here comes the long answer. Suppose you are Pablo Neruda and you happen to stop at a roadside stand and find the sellers to be in an appalling state of poverty. So अब आप अपना एक advice लिखिए to the roadside stand sellers. So dear brothers and sisters, have you read my poem Keeping Quiet? I don't think that you ever got an opportunity to go to schools and read literature. In my poem, I have advised people to stop their hectic activities for a few moments and to ponder over their lives. I know that you are not engrossed in the fever and fret of this materialistic world. Your lives are simple with simple needs. So जिस तरीके से बाकी लोगों ने अपनी lives को बहुत complicate कर रखा है, आपकी lives बहुत simple हैं, right? Because उनके means बहुत limited हैं. So you only want to earn some money which you are not able to because of the cruel indifference of the rich city dwellers. And but I recommend you to stop for all the activity for a few minutes and meditate. राइट सो रोड साइड स्टैंड की जो उसकी जो थीम है उसमें वो रोड साइड के जो आपके वेंडर्स हैं उनके ऊपर है, राइट? वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी. सो उन्हीं के ऊपर कह रहे हैं कि आपके जो मीन्स हैं वो तो बहुत कम है बिकॉज इन डिफरेंस है रिचेस और आपके बीच में. The deep contemplation will certainly provide you an insight into your problems. ये जो deep introspection है आपको आपकी problems के deep insight मिलेगा and you will come out with solutions. We all are so much obsessed with this materialistic world that we all need some time to be away from our jobs and silently go deeper into our minds. हम अपनी जॉब से थोड़ी देर के लिए वेट करें और अपने माइंड्स में साइलेंटली इंट्रोस्पेक्ट करें and souls. And if you do so, I promise you, my friends, you will feel much refreshed and energized. मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिफ्रेश और अच्छा लगेगा, राइट?